Breathing is something that we do almost 20,000 times a day. But do you actually take a pause and think about the quality of air that is going in your lungs? No, right? But with the air pollution on the rise, at this point of time, it has become a pressing concern. From pollution outside to indoor toxins, it is affecting us and our lungs. So just to get a fair understanding of the impact of air pollution on our lungs, today on Sehat pe Charcha, I have Dr. Salil Bendre. He is a chest physician from Mumbai, and we are going to understand the impact of air pollution on our lungs. Welcome, doctor. Thank you so much. Thank you. So, doctor, let's deep dive and understand what exactly is air quality index and why is there so much of a buzz around it? Yeah. So very important topic, and as Chandan you just introduced that we don't perhaps realize that we are breathing polluted air, and we realize it only when we have some problem in the form of cough or breathing difficulty or choking. Yeah. And that's because we take things for granted very easily. Things which are very valuable sometimes we take for granted. Even air is something like that. We breathe, but we don't realize. So coming back to your question, what is air quality? Now, what is the quality of air? It's the content of air. Like we hear of bad quality food or non-palatable food or water which is polluted. So similarly, air contains a lot of content. It has got gases, it has got some particulates, it has got hydrocarbons, it has got some toxins. More these toxins, more is it harmful to the lungs, because we breathe and from the lungs it reaches the blood reaches throughout the body. Right. So the quality is determinant about how much is the toxins in this air. So we have an air quality index which is considered to be good if it is between 0 to 50. And as we were talking just before this particular discussion, it's 199. It's 190. BKC area. So right it's now. like moderately poor air quality what we are breathing. Sometimes it has reached much more than that. So 0 to 50 is considered good. 300 or above is bad. Most of the times we are between say 100 to 200. No, I come from Delhi, so Yeah. I've usually lived in an area where the air quality is over 300, so that's fine. But tell me, help me understand that why is it that currently the air quality index or the AQI levels have gone bonkers, that it has increased in such a higher level? Yeah. So see, as a pulmonologist or a chest physician, we see patients who have seen to be having increasing symptoms of cough and breathlessness. And of course, the reason is what we breathe in. Commonest cause, specifically in the last couple of months, is the increase in the pollution because of the exhausts, the vehicular exhausts, even the road traffic and the redevelopment, though it's for a betterment, but the redevelopment which is going on, the construction which is going on, is causing damage to the lung, to the air. So that is a huge impact on the breathing and on the health of our patients. And of course, the lot of exhausts amongst the pollution, the vehicles. So the traffic jams, so the traffic which is happening, so that is also adding to it. Right. So I would say the weather, the change in the humidity. Now we are seeing a sudden change of heat wave coming in. Like we just recorded yesterday was a very hot temperature. So this change in the temperature, plus added to the pollution, added to the vehicular traffic and the redevelopment, the road changes, the concretization, everything together is creating a havoc. So there are multiple attributes Yes. to this cause of increase in AQI. Yes, Right? absolutely. But then we understand that even the quality of air in smaller cities, that's also poor. Yeah. There, this much amount of construction might not be happening. Then what can be attributed there? So see, somehow people feel that it's only in the urban areas, and we hear that when I went to the native place, it was all fine. It is fine, agreeable. But remember that even today, there are a lot of native places or rural areas which use the gas in the form of chulas or even the combustion which is causing this pollution in the air in the vicinity.
Plus, there are a lot of factories outside in the outskirts, industrial toxins, the chimneys which are there, the fertilizers which are being used. So there are many things apart from the urban area which are also getting affected. If we do the AQI, see possibly the breeze, the velocity of the breeze definitely reduces the concentration. But the content of the air in that particular vicinity, if you localize, yes, it is going to be harmful. Yeah. But okay, now I understand that irrespective of the location, if probably it has less amount of trees, it might be suffering from a higher AQI. Yes. But can you help me understand the connection between the air pollution and our lungs that are getting affected? How are our lungs getting affected by this high air pollution? Yeah. So when we are discussing all this, that air is going in and the pollutants are entering, there are two things which we should note. It is not only the outdoor air which is polluted, even the indoor air can be affected. So we'll come to that later on. But coming back to what you were asking, so when we breathe in air because we need oxygen. Right. And oxygen is only 21% of the air we breathe. So oxygen goes in, but all the other toxins or gases go in. And as they go in, it enters the lungs and it affects and causes inflammation. Inflammation in simple word, or in Hindi it's called sujan, or there is some edema, swelling which comes up. Mucus forms. Mucus is the mucus which a person coughs out, Right. and they try to trap those particulates. But if those particles are more in number, then there is an overwhelming reaction, and then the person starts actually having a cough or maybe a wheezing or even a lower respiratory infection. So wait, how would you categorize a cough or a cold which is attributable to a change in weather vis-a-vis the one which is happening because of air pollution? So it's like a very simple margin in it. See, whichever is seasonal, like patients will have a general tendency, they come to me saying, sir, मुझे है ना हर सर्दी में सर्दी जुकाम होता है, या जैसे ही मई का महीना शुरू हो जाता है और धूप आने लगती है मुझे खांसी शुरू हो जाती है, और in rainy season only I get an attack of asthma. So it's very typical of a seasonal burst of a symptom. But going on for the last couple of months, because of which we are discussing this hot topic, is that because of the last few months, we have seen a huge number of respiratory patients who were healthy, who were not having any symptoms of seasonal problems. Even the younger age group, who have not been smokers, they are also getting affected with pollution. Okay. So then in this case, how does one actually prevent, or how does one take care of protecting themselves from the air pollution? So we can't survive without air. Yeah. And if I tell you that you please go to Ladakh and change your livelihood, you stay there, it's not possible. So practical things we need to see, what's possible, what's applicable. Right. Wearing a mask, as everyone did in the COVID times, is something which is very essential and one should do, because especially when you are going out. See, in our city, going on a bike is of absolute essentiality because of the traffic. But bike exposes you to a lot of dust. Correct. So those who are bikers, who are traveling, even in auto rickshaws, especially those open vehicles, they should be using a mask. It reduces the exposure. I will never say that they are absolutely foolproof, but it reduces that. That too if you're wearing like an N95 N95, mask. even a surgical mask. See, now N95 is of course the best, as you mentioned, but then there are some barrier does reduce. You can't ask me how much percentage, because every mask has its own plus and minus, but that is one. Secondly, if you have a way out where you can do a carpooling, which we suggest very often, even people who are like, don't take your own vehicles. If you're going to a particular area, try to do carpooling. That will reduce the traffic. The lesser the traffic, it's easy for the travel also, and also the breeze, the movements of the breeze is much easier. Thirdly, people who are sensitized. Like there are people who know very well, okay, the moment I get exposed to dust, I start having a severe bout of cough, and I take an inhaler. So they should be on a particular inhaler as the doctor has suggested on a regular basis. It's like prevention is better than cure. So you take the inhaler if your doctor has said, and don't take it only if required. Keep it on every day and take it for a few months, and again meet the doctor to ask whether I can discontinue it now.
So there are many small advices which need to be customized. It cannot be a general advice, do this. But what I am coming to is masking is very important. Use of inhalers, especially those who have got bronchitis and asthma, is very, very important. Third is, there are now vaccines. We come to vaccines again, like influenza vaccine and pneumonia vaccine, Right. which increases the immunity and reduces the chance of a severe viral infection or a viral or a bacterial infection. Good hydration. Now, if whenever we have patients and ask, do you drink water? The answer is yes. I ask, how much approximately? No, I'm so busy, like I just have a cup of water in the morning, glass of water, then directly in the afternoon at 3 p.m. and later on. So it's less than 1 liter. But how is hydration playing a role in Hydration is this? very important. See, our body is made of maximum of water. Correct. Yeah, the blood flow, the viscosity, everything matters. Urine formation, toxins being thrown out of the urine. So if our water intake is good, it's very important. So good hydration, fresh vegetables. We are talking of masking. We are talking of inhalers. And coming to a very important burning topic, smoking. So I use the word burning. So smoking is something which we need to curtail. That's also a part of pollution, because not only the smoker, but the passive smoker, Passive smokers, they're also that getting is affected. also adding to the pollutions. So that has to be also done by the patient. So these are like lifestyle changes that Absolutely. need to be applied Absolutely. by people. Absolutely. Now, when I was trying to understand that what is the impact of air pollution on our lungs, what are the ways that you can actually find out that your lung is getting affected by the current air pollution? So if you want to just go and find out, okay, I have a problem or not, X-rays don't help us. Means just for people who are listening, okay, I will do my X-ray and find out. That doesn't help, because X-ray is not going to show the physiological abnormality of the lungs. Okay, so it doesn't make sense to do. No blood test can tell you, okay, this is the pollution which my blood is affected. There is a test called as a lung function test, Yes. or a spirometry, which is a test which doctors recommend, where a person is told to take a breath, blow with force, so that we can actually measure the volume of air the lung is able to take and throw out. And it can be analyzed, or it can be sort of correlated with the normal values. So to some extent it will tell us about the lung health. Okay. But if your question is specifically, is pollution affecting it, there is no such specific test which says, हाँ pollution के वजह से ऐसा हुआ है. That is all history taking, how the patient is. Many people have occupations where they are exposed to dust. They can't just avoid it. And even, coming to that may not be exactly related, but pets. Pets themselves can induce a lot of allergens in the house and can induce a kind of allergies in the lungs and cause symptoms. So, sir, now let's just do something that's more interactive. I've got something by the name of Mythbusters. So, I'm going to tell you a statement and आप प्लीज़ बताइएगा कि वो फैक्ट है मिथ. ज़रूर ज़रूर. घर के अंदर एयर प्योरीफायर लगाने से आप अपने आप को एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इज दैट अ फैक्ट और अ मिथ? सो थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा इस सवाल पे. एक तो कुछ चीज़ें हाँ, कुछ चीज़ें ना, दोनों का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है. एक जो एयर प्यूरीफायर है वो प्यूरीफायर करता ज़रूर है, लेकिन सब की सब पार्टिकल्स को प्यूरीफाई नहीं कर पाता है. नॉट ईच एंड एवरी पार्टिकल, नन ऑफ देम आर 100% सेफ एंड बेस्ट. तो जो लार्जर साइज पार्टिकल्स है उसको प्यूरीफाई करता है. सो ऐसा ना सोचे कि एयर प्यूरीफायर घर पर है इसका मतलब अभी हम एकदम सेफ हो गए हैं. कुछ परसेंटेज में उसकी असर होगा, थोड़ा सा कम होगा. तो जो भी एस्थमेटिक्स है, जिसको एलर्जी है, जिनको ब्रीदिंग की तकलीफ़ें हैं, yes, it is recommended that you can use a air purifier in the room, क्योंकि हर एयर प्यूरीफायर का एक डायमीटर रहता है और एक पर्टिकुलर एरिया कवर करता है. सो जिस रूम में आप ज़्यादातर रहने वाले हो, सोने वाले हो, वहाँ पर आप यूज़ करिए. कोई हानि नहीं है. बेनिफिट कितना होगा ये उसकी गारंटी नहीं है. ओके, सो इट्स अ पार्शियल फैक्ट, पार्शियल. मास्क लगाने से आप अपने आप को एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं. बट अगेन ऐसा क्या है कि इसका आंसर हाँ बोलें तो हर पेशेंट को लगेगा अभी मास्क पहन लिया, अभी मुझे कुछ उसका असर नहीं हो रहा है, मुझे कोई उसकी तकलीफ नहीं है. ऐसी बात होती नहीं है.
पर एक बैरियर आ जाता है, सो एक फ़िल्टर होके अंदर हवा जाती है, सो कुछ हद तक उससे भी फ़र्क पड़ता है। और एयर पोल्यूशन तो एक चीज़ है, लेकिन किसी को अगर इन्फेक्शन है और आपके बाजू में बैठे है, कोई ऑफिस में है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, राइट, उसमें भी जो क्रॉस इन्फेक्शन है उसकी भी मात्रा मास्क लगाने से कम ही होती है। ऑलराइट। थर्ड है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से यू आर इन द पीक ऑफ योर हेल्थ। एक्सरसाइज कभी भी करना अच्छा है, उसमें कोई 24 घंटे या सूर्य देव आए तभी एक्सरसाइज करो, उससे एनर्जी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका टाइम देखो, कन्वीनियंस देखो, पर डेडिकेटेड करो। मेन थिंग है कि मैंने हफ्ते में 2 बार कर लिया तो ठीक है, ऐसी नहीं। क्योंकि कुछ पेशेंट्स अंदर मैं बताता हूँ, वो ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने ना सिगरेट 2 स्मोक कर ली, लेकिन मैं रात को शाम को जाके ट्रीटमेंट करने वाला हूँ, तो वो न्यूट्रलाइज होने वाला है। या मैं अभी पार्टी करके आऊँगा, कल तो जिम में 2 घंटा बिताऊँगा, तो जो हुक्का लिया है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए। मैंने बीच में जब एक आर्टिकल जब मैंने पढ़ा कि दिल्ली में द AQI was so bad that it was almost as if you are having 20 odd cigarettes in a day. Yeah. So I'm not a smoker. Yeah. But I realized that people who were living there Yeah. are having that kind of an effect on their lungs. बिल्कुल। Right. So it doesn't matter कि आप खुद स्मोक करते हो या नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हवा की वजह से पता लगता है कि आपकी लंग की कंडीशन कैसी है या नहीं। Absolutely. So same goes for the exercise. If you're doing it in the morning and if the AQI is not that good in It's your going to area, affect you. Yeah. And it does affect, क्योंकि थक जाएंगे जल्दी, इनफैक्ट आपको ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। सो जिसको भी तकलीफ है, खांसी है या ब्रेथलेसनेस, वी टेल देम कि डोंट स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइजेस टिल यू सेटल डाउन, क्योंकि वो भी एक मिथ ही है कि एक्सरसाइज करने से तबीयत अच्छी होती है। नहीं, अभी आपकी बीमारी है, तकलीफ है, तो उल्टा आप रेस्ट ले लो, हेल्दी बनो, फिर। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक मिथ बस बोलता है, पता नहीं आपके जहन में आया कि नहीं, लेकिन अगरबत्ती, हाँ, उससे भी पोल्यूशन बहुत होता है और उससे भी लंग्स में हानि पहुँचती है। So the last bit of it is that should pregnant women worry about the AQI, that can the baby be affected by the AQI? 100%. So anything which the mother is going through, which is unhealthy, is going to affect the baby, because the dust, the pollution, and it has been proven scientifically that people or ladies who are pregnant and who are constantly exposed to a bad air quality, they do affect, their child is affected. There may be a abnormality during their sort of pregnancy in the child itself. So it causes harmful effects. But it's not like one day of exposure and there is harm. But if it's consistently, you are going to be exposed, बार बार वहीं पे जा रहे हो और या माहौल में वैसा रहेगा, बिल्कुल हानि पहुंचती है, and you have to be careful. In fact, my friend, what he did recently was he stopped smoking. He started, planting a lot of indoor plants. And not just that, he had put up like purifiers in almost each and every room. And he was like that, now I'm sorted, now nothing can affect me. But then we realized that it is just the indoors that has become safe. You also have to step outside, Barabar. right? That is when the game changes. Yeah. So it was a complete, mental change. It was a psychological change that was required, wherein every time he stepped out, he was wearing masks because he was somebody who had a lot of cold cough and persistent cold cough. Correct. So what about the cases? So do people come to you with such complaints that their cough is not going away? Oh yes. So before I go to that, so when your friend did that, he should also be aware that plants and pollen, especially the flowering plants, they are also not what we call very safe. Not the best, for people but who he may got get the allergies. But he got the ones which are good for your breathing and everything. नहीं तो वही क्या है, ये सब information spread होनी ज़रूरी है. नहीं तो क्या नीम के पत्ते से या फिर परफ्यूम्स है, some particular flower का परफ्यूम है, so it makes you feel good, but again उससे भी तकलीफ होने की chances रहेंगी. तो indoor pollution is like a big issue which हमें सबको मालूम होनी चाहिए. Awareness is important. So in your case, what are the kind of prevention techniques or guidance that you give for indoor air pollution control? So सबसे पहली चीज़ ना, जो फ्लोर कारपेट्स हैं,
दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, बिकॉज उसमें डस्ट माइट्स, हाउस डस्ट माइट नाम से जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, दे कॉज लॉट ऑफ एलर्जीज. और जिसमें भी वेलवेट्स है, वेलवेट सोफ़ा कवर्स है, जैसे कि आप बैठे हो, फिर हाँ आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, फ्लोर कारपेट्स है, एयर कंडीशनर्स है जिसकी सर्विसिंग नहीं हुई, जिसमें फ़िल्टर कभी क्लीन नहीं किया गया हो, पिजन्स विच आर अराउंड द एयर कंडीशनर डक्ट्स और नियर द बालकनीज. तो ये सब चीज़ें भी हमें उतनी ही गहराई से, उतनी सीरियसली देखनी चाहिए. और जैसे हम बता रहे थे कि एयर फ्रेशनर्स, सम पीपल हैव दैट थिंक कि ये अरोमा अच्छा होना चाहिए, उससे एकदम सुकून मिलता है, लेकिन वो भी फाइनली एक केमिकल है जो आपके लंग्स को कर रहा होगा डैमेज. आई एम नॉट सेइंग कि हर एयर फ्रेग्रेंस अफेक्टेड, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स है, खांसी है, बार बार सर्दी हो रही है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है. So is there a specific trigger, specific symptom that can help you identify it? Yes, so if there is persistent, recurrent chest congestion, throat irritation, running nose, cough. So क्या है, when we inhale anything, first it goes through the nose. Yeah. So सर्दी, जुकाम, छींके, फिर it reaches the windpipe, वो गले में खराश, खांसी, hoarseness, और lungs में जाने के बाद breathing या choking या tightness. तो ये तीनों symptoms 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे होते गए, तो यू नो दैट समथिंग इज नॉट गोइंग करेक्ट. तो आपको इमीडिएटली उस पर कुछ ना कुछ तो. बट कैन दिस बी मिस्टेकन फॉर डस्ट एलर्जी? या इट कैन बी, एंड इट कुड बी समथिंग एल्स एट द सेम टाइम. अभी हम जब ये सब बोल रहे हैं ना कि पोल्यूशन, सो जो भी सुन रहे हैं और जिनको खांसी है 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, प्लीज़ उनको ये भी समझना चाहिए कि हर खांसी मीन्स पोल्यूशन, ऐसी बात नहीं, कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ सकती है. तो खांसी 10 दिन 15 दिन के ऊपर हो तो प्लीज़ आप खुद का डायग्नोसिस मत कर लो कि अभी पोल्यूशन बढ़ गया है तो मुझे तो खांसी पोल्यूशन से ही हो रही है. आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, एक्सरे भी करना चाहिए. और एक सवाल जो आप पूछ रहे थे कि खांसी बहुत दिन चल रही है, दैट्स गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट इज़ वेरी ट्रू. सो प्रेजेंटली गए 3-4 महीनों से हम देख रहे हैं कि खांसी बहुत दिन चल रही है, वो भी सूखी खांसी. राइट. हाँ, ऐसी है कि कफ नहीं निकल रहा है लेकिन कंटिन्यूस कॉफ. रात को लेटने जाते हैं, सोने जाते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है, इतनी तक कि हम बात भी नहीं कर पाते, ऑफिस में नहीं जा सकते. सो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देख रहे गए कुछ हफ्तों से, ये मोस्ट कॉमन कॉज इज़ द एयर क्वालिटी इंडेक्स. और उस पर ट्रीटमेंट है, ऑफ कोर्स मेडिकेशंस है, इन्हेलर्स है, हमारे इम्यूनिटी इम्प्रूव करने की दवाइयाँ हैं, और कुछ दवाइयाँ जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, यानी हमारे फेफड़ों की ताकत बढ़ाते हैं. जो अंदर सूजन, जो हम पहले क्वेश्चन में कह रहे थे कि इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आती है, उसको कम कंट्रोल में रखने की ताकत रखते हैं. सो आप आपके डॉक्टर से मिलेंगे, उनकी राय लेंगे, तो वो ज़रूर आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की राय ज़रूर देंगे. ओके. सो ये तो हो गया कि अगर इन्फ्लेमेशन है लंग्स में तो ये सब कम करने के लिए, ऑफ कोर्स दीज आर द प्रिवेंशन टेक्निक्स. बट व्हाट आर द वेज दैट सो मुझे याद है कि बचपन में कोई भी दिक्कत होती थी तो मेरी दादी का नुस्खा काम आता था. राइट. गला ख़राब है, पेट दर्द है, तो मुझे हींग, चाय, ये सब बेसिकली एवरीथिंग किचन आइटम्स वो मुझे दे दी जाती थी. तो आर देयर स्टिल सच आइटम्स विच आर अवेलेबल इन द किचन विच कैन हेल्प अस with this dry cough or with this air pollution or the symptoms that we get? So simplest thing which I think each and every person, especially कोविड के बाद शुरू किया, वो स्टीम इनहेलेशन. गर्म पानी की वाफ. तो वो एक अच्छा तरीका है नेज़ल कंजेशन कम करने का, क्योंकि वो ह्यूमिडिफाई कर रहा है, पर इतना भी नहीं कि वहाँ से आपको बर्न्स हो जाए. और पानी इतना बार उबाले और इतना गर्म करे कि दिन में है, आई मीन कुछ लोग ऐसा करते हैं, हर 6 घंटे में स्टीम इनहेलेशन करते हैं. किस लोगों को यहाँ पे बर्न्स होके आ गए हैं. सो एक्सट्रीम नहीं, लेकिन हाँ वो एक चीज़ है. फिर जो हल्दी वाला दूध, हल्दी डाल के, टर्मरिक डाल के जो दूध लेना है, इट्स गुड, इट इज़ प्रूवन, एंड हर्बल मेडिकेशंस हैव प्रूवन के येस दे हैव गॉट इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट, एंड दे आर हेल्पफुल. सो वट एवर दादी जी कह रही थी, दादाजी कह रहे थे, उनमें बिल्कुल सेंस है और वो हेल्प भी करता है. पर ऐसा नहीं करिए कि हाँ वो लिया यानी सब ठीक हो गया, वो अमृत है, ऐसी कोई बात नहीं है. हमें हर चीज़ का
ऑब्जर्व करना है कि उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहूँ, हमारी इम्यूनिटी हमारे खुद के हाथ में है। सो आप कितने बजे खाना खाते हो, कितने बजे सोते हो, कितना रेगुलरली खाना खाते हो, क्या खाते हो, फास्ट फूड है, सोडास है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब चीज़ें जो है प्रिजर्वेटिव्स वाली। सो हम जब पोल्यूशन की बात करते हैं और प्रिवेंशन की बात करते हैं ना, तो ये भी साइमल्टेनियसली उसमें आ जाता है। सो तो आई रिमेंबर दैट जब बचपन में हम लोग मेरे गांव की तरफ जाया करते थे, सो माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि हर जगह का खाओ, हर घाट घाट का पानी पियो, बिकॉज दैट वेज आपकी इम्यूनिटी बढ़ती। एंड आई समहाउ फील दैट इट्स अ फैक्ट, क्योंकि आज के टाइम पे लोग ना बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। दे गेट सिक वेरी इजीली जस्ट बाय द चेंज ऑफ वेदर और जस्ट बाय द वाटर। Correct. So what are your thoughts on that? No, what you are saying is very true. लेकिन ये जो पहले के ज़माने में, तभी के टाइम में हम वैसा करते थे, आई थिंक अभी क्या करना है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या करना चाहिए, इस पे अभी फोकस करेंगे, ताकि आगे जाके फिर क्या होने वाला है, फिर हमारी सेहत कभी रहेगी, वो उसके बारे में अच्छी चीज़ें हो। सो अभी आज के तारीख में काफ़ी बीमारियां हैं ना, लाइफस्टाइल बीमारियां हो गई है। ओके, और लाइफस्टाइल ये हमारी खुद की जिम्मेदारी की वजह से नहीं हुई है, ये पूरा माहौल चेंज हो गया है। टाइम पे सब कुछ होने लगा है, टाइम टेबल पे सब कुछ होने लगा है, डिमांड्स बढ़ गए हैं, प्रोफेशनल कंपटीशन बढ़ गई है, सर्वाइवल की इश्यूज आने लगे हैं। सो हमारा वक्त अभी हमारा नहीं रहा, किसी और का रहा है, और वो हमारे शरीर पे असर करने लगा है। सो आप जब कहते हो ना कि ये सब अभी क्यों इतना सेंसिटिव होने लगा है, तो इसके कारण स्ट्रेस, हमारे इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स, उसमें सब आ जाता है, उसमें व्हाट्सएप भी आ जाता है। बिकॉज जो मोबाइल के अभी दौर आ गया है, कई लोग, मीन्स वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एयर पोल्यूशन, बट थोड़ा सा इस पे हम बात कर रहे हैं कि पूरा टाइम टेबल हमारे इम्यूनिटी को कम करते जा रहा है। Okay. एवरेज स्लीपिंग टाइम इज़ 11 PM. Yeah. And sleep time is just 4 hours. Average lunch time is 3:30 PM दोपहर का. Average dinner time is 10:30. So अगर हम कहेंगे कि क्या ये अभी मुझे ये क्यों हो रहा है, मुझे मास्क लगाना है, अरे भाई मास्क तो लगाइए, लेकिन बाकी की चीज़ें भी ध्यान दो। So basically you're saying that it is the discipline which can get you back. So your immunity is yours, it's in your hand, you need to control it. तो उसके साथ ये सब चीज़ें भी आप करो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास हेल्दी पीपल, जैसे हम एक पेशेंट के बारे में कह रहे थे कि खांसी, अनकंट्रोल्ड कॉफ, यंग मैन, 25 ईयर ओल्ड बॉय, हीज़ खांसी आ रही है, कम ही नहीं हो रही है, इज़ नेवर डन एनी स्मोकिंग। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा था ना, आप प्लीज़ निगलेक्ट मत करो, इग्नोर मत करो, क्योंकि ये आज जो 10 दिन की खांसी है, अगर आज आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे या उसका बराबर इलाज नहीं करेंगे, तो ये 10 साल की बीमारी हो जाएगी। नहीं, but in this case, what happened to the guy? Yeah, so he was treated, but he needed steroids, यानी इन्हेलर्स भी लगे थे जो सेफ रहते हैं, फिर गोलियां लगी थी, कुछ स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ी थी जो शॉर्ट ड्यूरेशन थे, और फिर वो कंट्रोल करके वो सब चला गया, लेकिन फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी। But in that case, a person who's 25 years old, who's never smoked, yes, what is the cause in his case? So in his case it was of course the dust and the pollution, because वो हर दिन एक्सपोज हो रहा था, कहीं से यहाँ से जा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया से 13-14 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहा है, एक्सपोज हो रहा है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी भी कम थी। तो सबको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आपकी खुद की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ज़्यादा तकलीफ होगी। So you're saying that if a condition like this, if you're ignoring your health for a longer period of time, so what can be the effects of that? It can be anything from just fatigue, यानी थकान, ये भी उसका ही नतीजा है। भूख कम होना, वो भी नतीजा है। हाइपरटेंशन, वो भी पॉसिबल है। और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज, ये सब चीज़ें हैं ये इरेगुलर लाइफस्टाइल, इरेगुलर खाना पीना या इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है। अनदर मिथ और फैक्ट का एक क्वेश्चन था कि अगर आप हायर फ्लोर पे रहते हो, मान लीजिए 15-20 माले पे, तो वहाँ पर आपकी जो हवा है वो रिलेटिवली रहती है। अभी वहाँ पे जाना चाहिए, यस, और वहाँ पे रहना चाहिए, सिर्फ फ्लैट देख के नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, सो सर,
Are there any other diseases that can happen due to air pollution that is affecting our lungs? Yeah, so one of the things which we should talk about today is also, of course, we spoke about asthma, bronchitis, but at the same time, lung fibrosis, ये एक बीमारी पाई गई है, हम भी देख रहे हैं, जो धूल, डस्ट, पोल्यूशन से हो रही है या एग्रेवेट हो रही है. ओके, फाइब्रोसिस मीन्स फेफड़ों की जो इलास्टिसिटी है वो कम होना. राइट. हाँ, तो जो शहर है जिसमें धूल डस्ट है उसमें ये फाइब्रोसिस का भी प्रमाण ज़्यादा पाया गया है. ये धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी होती है, यानी खांसी आना, थोड़ा सा सांस फूलना, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर वो बहुत आगे हद तक चली जाती है, क्योंकि शुरुआत में उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि खांसी है तो कुछ नहीं, ये दवा से चला जाएगा. सो आई थिंक जस्ट टू हाईलाइट कि वी नीड टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड एंड डायग्नोज्ड इन टाइम. लंग फंक्शन टेस्ट, एक्सरेज, ये सुविधाएं हमारे देश में इतनी इजीली अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें और वो उस हद तक न जाए, इसकी पहले ध्यान दें. So sir, what would be the 3 tips or advices that you would like to give to people if they want to protect themselves from air pollution and keep their lungs in a green state? ओके, सो प्रिवेंशन, जैसे हम बताए हैं शुरुआत में भी कि धूल, डस्ट इस एरिया से जितना होता है अवॉइड करिए, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे. मास्क इस्तेमाल करिए, दैट इज़ द सेकेंड थिंग. हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो इग्नोर हो जाती है क्योंकि आपका टाइम टेबल में वो फिट नहीं होता है, पर वो उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कफ है, खांसी है, सो मैं सिर्फ टैबलेट लेके कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ और 6 दिन के बाद देखता हूँ, ऐसे मत करिए. 4-5 दिन में अगर नहीं कंट्रोल में आता है, तकलीफ़ है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि वो तकलीफ़ वहीं पे रुक जाए और ना कि आपको आगे जाके उसके वजह से कुछ और तकलीफ़ बड़ी बन जाए. Right. नहीं, but thank you so much, doctor, for such an insightful session. It was my pleasure, and I was able to understand more about air pollution and its impact. So thank you so much. थैंक यू सो मच, इट्स वॉज अ प्लेजर. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और होप हमारे दर्शकों से भी इससे फ़ायदा हो. थैंक यू. Yes. तो दोस्तों, आज हमने सेहत पे चर्चा के इस एपिसोड में जाना कि कैसे हमारी रेस्पिरेशन अफेक्ट हो रही है एयर पोल्यूशन से, कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट डाल रही हैं. एयर पोल्यूशन जो कि इनविजिबल है, उसका एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ चेंजेस करके, पेड़ लगाकर, अपना डिसिप्लिन लाकर लाइफ में, एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इन चीज़ों से बच सकते हैं. हेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक चॉइस नहीं. तो अगर आपको भी कोल्ड, कफ या कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज एवरी ब्रेथ मैटर, लंग्स मैटर. थैंक यू.